है, बट आई थिंक आपने काफ़ी बड़ा प्रेजेंटेशन बनाया है अपने फर्म की तरफ से क्लाइंट्स के लिए एनालाइज करके बजट और डिटेल्स बजट के और मार्केट का रिएक्शन तो हमने देखा ही है, बट कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं कि इस ऑप्टिमिज्म को बेस्ट कैप्चर करेंगे यहाँ से? गुड मॉर्निंग अजय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स. आपके दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग. सो फर्स्ट लेट मी ट्राई एंड बजट को और मार्केट को थोड़ा अलग से देखते हैं. अपनी वी ट्राई टू लुक एट द market to budget through the prism of markets always. Budget is not meant only for markets, it is meant for the economy and it is balancing of books. And दिन ब दिन ये budget का influence on the market is going down. More and more decisions are being taken outside of the budget. So with that perspective, and also let me give a backdrop of going into the budget. Having said that, it doesn't mean budget is not important. Of course, बजट इकोनॉमी का रुख मोड़ सकता है. इट कैन एक्सेलरेट द ट्रेंड दैट आर ऑलरेडी देयर एंड इट कैन डिसेलरेट आल्सो. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बजट इज इम्पोर्टेंट फॉर मार्केट. मार्केट का ऐसा है ना कि लास्ट आप अगर देखो तो लास्ट 1-2 साल से इकोनॉमी वाज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड एंड देयर वाज अ नीड दैट गवर्नमेंट सपोर्ट गिव सपोर्ट टू द लोएस्ट स्ट्रैटा ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ कोविड, व्हिच इज व्हाट इट वाज डूइंग. और इस बजट में essentially they are taking away a lot of that one-time support that was given. So from that point of view, it is removing some of those one-time things, and that brings a lot of credibility. Numbers में काफी credibility है. Tax buoyancy या tax के growth जो expect किए हैं revenues में वो काफी realistic हैं. In fact, I would say there is a possibility that there can be a surprise on the positive side. So I am actually very happy with that. It is a continuity, it is credible, and within the constraints that have been provided. So if there was to be a big COVID wave which leads to a lot of hospitalization and shutdown of economy, then it can change things. But मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है. Even if there was to be a COVID wave, the economy is not going to get impacted, and that is what this budget is also acknowledging. Coming back to the markets, तो markets तो 2 साल से तेजी में है. मेरा व्यू ये है कि we need to digest the gains that we have made over the last 2 years, but at the same time stay positive. It is not the time to slow down, maintain growth focus. It is not the time to move away from investing in the markets as well. Yes, थोड़ी बहुत volatility आएगी, but that is part and parcel of the market. It is a feature, not a bug. And you should look at it as an opportunity. जी साथ ही रवि और एक बात बताइए कि आपने जो कहा पैंडेमिक और उसकी रिकवरी की बात की, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी प्रेशर में है या फिर प्री पैंडेमिक लेवल्स तक नहीं पहुंच पाया है. जो मैं ये कहूँगा कि जो पिछड़ा हुआ हिस्सा है इकोनॉमी का, उनकी मैं बात कर रहा हूँ. अब इस बजट में कोशिश तो की गई है कि उन्हें भी लिफ्ट किया जाए, बट दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लान. तो ये जो फुल ब्लोन रिकवरी है वो इस साल आप प्ले आउट होती देख रहे हैं क्या, जहाँ पर ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी हिट प्री कोविड लेवल्स? Yes, I think there is a possibility that this year can be a full-fledged recovery and across the board. I'm talking in terms of economy and not in terms of market. Of course, market has anticipated that, and उसी के वजह से market आज है जहाँ है. So इस साल everything there should be no constraints to growth. If only the biggest stimulus to the economy is not something that we are expecting in the budget. If the central government as well as the state government do not impose any further restrictions like lockdown or anything because of COVID, then the pent up demand itself will make sure that the growth is tremendous this year. And that I think has a very good chance of playing out this year. होना ही चाहिए, होता ही रहेगा. All right, morning Ravi, pleasure to have you on Swadesh. अब यहाँ से क्योंकि कई सारे सेक्टर्स ऐसे जहाँ पर बजट में जिन पर अच्छा निकल कर आया और वहाँ पर ग्रोथ मोमेंटम है भी, नई कैपेक्स साइकिल शुरू होगी तो जाहिर तौर पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स से जुड़े थीम्स जिस पर ऑलरेडी पहले भी ये बात निकल कर आ चुकी है और वो ऑलरेडी एक कैपेक्स रिवाइवल साइकिल में है. लेकिन यहाँ
इस स्पेस को देखें, डिजिटाइजेशन के स्पेस को देखें, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, उसको बढ़ावा देने की बात हो, गेमिंग पर भी बजट में बात हुई, कोई नई थीम्स आपको इमर्ज होती हुई दिखाई देती हैं इन सब के बीच? No, good morning. I don't see any new theme emerging, but there is a lot of reinforcement towards the old theme. काफी चीजें जरूरत थी. So there are three mega trends that are playing out in the world today, and for which India also has a big part to play. So the number one trend in the world is digitization. Number two trend in the world is China plus one strategy जो अपना रहे हैं सारी developed countries की companies, which is they are moving their supply chain away from China and into other countries where India has a big role to play. And the third mega trend that is playing out, I see, is the energy transition. We are moving away from fossil fuel towards renewables. ये तीनों मेगा ट्रेंड को reinforce किया है इस बजट ने. So whether it is the PLI extension for solar or the introduction of basic customs duty, boost to the battery swapping, whether it is imposition of disincentive for the petrol and moving towards ethanol blended fuel. So there are many steps taken which give boost to renewables. On the front of digitization also, it is not only that the companies are digitizing, but it is also the government. So many of the government services are now getting digitized, and there is better coordination being happening between various departments. That will lead to tremendous productivity improvement for India as a whole. So वहाँ पर भी काफी reinforcement है. And the third theme that I mentioned was the digitization, energy, and the China plus one. All three themes have been reinforced. And then there is a second part of the thing, which is the cyclical recovery in the economy that we are very bullish on. Besides these three mega trends, and वहाँ पर भी काफी reinforcement है. So increase in the capex. Of course, the increase in the capex allocation is much lower than what we would like. In headline numbers are much bigger than what it is actually implied. But within the constraints, I think government has done well to maintain that capex push. And we have avoided giving any kind of populist measures, subsidies बढ़ाना. वो सब एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल के लिए ठीक होता है. But from the longer term point of view, those measures lead to distortions in the economy. So by avoiding that, actually, they have done a very good job. So I think there are mega trends that are playing out, which have been reinforced, and then there is cyclical recovery that is happening, whether it is capex or real estate and financials. And वहाँ पर भी जो boost मिलना चाहिए था वो है. That way, the budget has reinforced all the trends that we were bullish on. राइट रवि, इस समय आपका बजट तो एक बात हो गई, क्लियरली बजट, क्योंकि आप मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, आप बजट को मार्केट की दृष्टि से एनालाइज कर सकते हैं. लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इस समय किस तरह का है. आप उसमें डोमेस्टिक ग्रोथ और सिक्लिकल्स को कितना वेटेज दे रहे हैं, किस तरह से प्ले कर रहे हैं? राइट अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि यू हैव टू स्टे फुल्ली इन्वेस्टेड and you have to think 3 years, 4 years, 5 years. Don't worry about next 3 महीने में क्या होने वाला है, मार्केट करेक्ट होगा, शायद मार्केट करेक्ट हो भी चुका होगा. So the presentation that you spoke about, मेरा यही presentation था कि जो इकोनॉमी में बूम आने वाला है या शुरू हो चुका है, is going to be even stronger and longer than जो 2003 से 8 में हुआ था. अगर आप 2003 से 8 में देखें तो मार्केट एंटायर मार्केट 8 गुना हो गया था. नीचे में 4.5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप था वो 40 लाख करोड़ तक पहुंच गया था इन अ स्पैन ऑफ 5 years. 53% कैगर रिटर्न ओवर अ 5-year पीरियड मिला था मार्केट में. सो ऑफ कोर्स देयर वर एक्सेसेस एंड देन दोज एक्सेसेस गॉट करेक्टेड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. बट वो बात की बात है. यू हैव टू फर्स्ट लुक एट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द बूम पीरियड. And if I am saying that this time the boom can be even stronger and longer, then the first thing you have to make sure is that you stay invested and don't get worried about the volatility in the market. Market to up down hota rahega. You have to think long term. India is going to boom in a big way, and there are many things which is going in India's favor.
So coming to the portfolio construction, I think yes, there are these mega themes. What we want is जो हमारी कंपनी जो हम सिलेक्ट करें वो किसी एक थीम या एक चीज पर ना डिपेंड करे. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर ऑलवेज प्लेइंग आउट. अगर रिन्यूएबल्स है तो रिन्यूएबल्स में भी अगर एथेनॉल हो, सोलर स्टोरी हो, या फिर सम काइंड ऑफ हाइड्रोजन स्टोरी हो, तो इफ देयर आर मल्टीपल थिंग्स पैनिंग आउट and there is lesser and lesser dependent on government doing something, then it is better. In terms of moving towards cyclical, yes, in the last 3-4 months we have moved towards the cyclical, whether it is real estate, financial, or capex related place. These are the companies that where we have increased weightage in the last 3-4 months by reducing some amount of weightage from the secular theme, because the valuation over there had gone a little high. But we continue to remain bullish on those themes. And post the correction in the last 1.5 months, most of the froth has been taken out of those secular themes as well. So if I were to get new flows into my funds, I would equally split between the cyclical recovery as well as the secular theme. ऑलराइट, चलिए रवि, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए.